Hello everyone, I'm Vinash. आज हम करेंगे numericals on integers. Okay, please watch part 1. Now first question is evaluate minus 25 minus 125 plus 80. Okay, so this becomes minus 25 plus 1 to 5. If two negatives are together, they will cancel out each other, plus 80. Okay, so this becomes 100 minus plus minus होता है plus 80. So this becomes 180. Okay. Now question number 2 is minus 62 minus 38 minus 100. Okay. So this becomes, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का होता है. So this becomes minus 100 plus 100. So this is equals to 0. Okay, we note it down. और यहाँ पे अगर मैं दो नंबर को माइनस करूंगा तो फिर साइन आएगा, साइन विल बी ऑफ बिगर नंबर. इफ आई सबट्रैक्ट टू टर्म्स देन द साइन विल बी ऑफ बिगर नंबर. यहाँ हमेशा बिग नंबर का साइन ही आता है. ओके. नाउ इफ आई सबट्रैक्ट टू नेगेटिव इंटीजर्स लाइक इट इज माइनस ए माइनस विद, देन आई विल ऐड, इसको मैं ऐड करूंगा, बट द साइन विल बी ऑफ नेगेटिव. ओके. If I multiply two negative integers, I will get a positive value. If I multiply a positive integer with a negative term, the value will be in negative. Same goes for division also. So this is the basic rules. Okay, note it down. Now, before moving further, you will learn about absolute value of a term. Now what it is, like I have minus 20 and I want to find the absolute value, I will put the mod. This is known as mod. Now what happens that this mod removes the negative sign and makes the term positive. Okay, so minus 28, the absolute value of minus 28 is plus 28. Similarly, mod of minus 100 becomes plus 100. Okay, and a positive value remains positive as it is. Okay, so if I want to solve it now question is 26 minus 64 inside a modulus. So pehle I have to evaluate this term. So this becomes minus 38. Now since there is a modulus sign, so this becomes plus 38. Okay, note it down. Now question number 2 is evaluate minus 16 minus modulus 16 minus 76 minus modulus minus 98 minus 2. Okay, so this can be written as minus 60. Okay, minus 100 modulus. So this becomes 60 and this becomes 100.
Okay, so two negatives together, so they will add, and the value will be in negative. This becomes minus 160. Okay, please note it down. Now, question number 3 is evaluate minus 300 divided by 50 into minus 4 प्लस 240. ओके, तो फिर यहाँ पे we lose board mass. What is board mass? Bracket of division, multiplication, addition, subtraction. So this is done in class 5 and 6. So first we will divide. So this becomes minus 6 into minus 4 plus 240. Okay, so two negatives together, so this becomes 24 plus 24 plus 240. So this becomes plus 264. Okay, note it down. Now question number 4 is evaluate minus 90 into 18 plus 82 into minus 90. Okay, now here we learn a new property. उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये क्वेश्चन करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसमें क्या होता है, I'm gonna take the number common which is repeating. यहाँ पे जो minus 90 है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा. ओके, तो उसको हम कौन बोलते हैं? व्हाट इज कॉमन? जो दोनों में रिपीट हो रहा हो ना. यहाँ पे जो कॉमन आया था उसका पार्टनर देखना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पार्टनर्स का 18 है और यहाँ पार्टनर्स का 82 है. सो दिस बिकम्स माइनस 90 इंटू 18 प्लस 82. सो दिस बिकम्स minus 90 into 100, which is minus 9000. Okay, note it down. The question number 5 is verify a into b plus c is equals to a into b plus a into c if a is equal to 10, b is equals to minus 6 and c is equals to minus 4. Okay, so मुझे यहाँ प्रूफ करना है. ये इसका LHS है और ये इसका RHS है. कोई भी फॉर्मूला तब प्रूफ होता है जब दोनों साइड में इक्वल वैल्यू आती है. So my LHS becomes a into b plus c. So what is a? A is 10, b is minus 6 and c is minus 4. So a is 10, b is minus 6 and my c is minus 4. अगर एक पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन साथ में आएंगे तो पॉजिटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स नेगेटिव. सो दिस बिकम्स 10 into minus 6 minus 4, so which is 10 into minus 10, which is minus 100. Okay, so this was my
LHS. Now RHS is A into B plus A into C. Okay. So what is my A? A is 10, B is minus 6, and A is 10, and C is minus 4. So यहाँ पे we are multiplying a positive term with a negative term. तो आंसर माइनस में आएगा. It is minus 60 plus minus 40. Now a positive and a negative sign are together. So this becomes minus 60 minus 40 is equals to minus 100. Okay, so I will write, therefore LHS is equals to RHS, hence proved. Okay, note it down. Question number 6 is, verify A into B minus C is equals to A into B minus A into C when A is equals to 8, B is equals to minus 12 and C is equals to minus 5. अगर A 8 है, B 12 है, then prove that the of our condition is true. A is minus 12 and C is minus 5. Okay, so I will take LHS. LHS is A into B minus C, which is 8 into minus 12 minus minus 5. यहाँ लिखा था B minus C और C पहले से नेगेटिव है, so we have two negative sign together. So this becomes 8 into minus 12 plus 5. Be very, very careful. So this becomes 8 into minus 7, which is minus 56. So my LHS is minus 56. So RHS, so my RHS is A into B minus A into C. Now what is my A? A is 8, B is minus 12. Okay, again A is 8 and my C is minus 5. So this becomes minus 96 plus 40, माइनस प्लस माइनस होगा और साइन माइनस का आ जाएगा. सो इट बिकम्स माइनस 56. सो अगेन LHS is equals to RHS, hence the value is proved. Okay, please note it down. Now next question is, subtract minus 80 from minus 120. Now यहाँ पे जो भी टर्म फ्रॉम के बाद आएगा हम उसको पहले लिखते हैं. द टर्म ऑफ फ्रॉम कम्स फर्स्ट, सो इट इज minus 20. ना क्वेश्चन करना है क्या, सब्ट्रैक्ट करना है. सो टू सॉल्व पुट द माइनस साइन एंड दिस हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, सो इट बिकम्स minus 80. जो फ्रॉम के बाद है पहले आएगा. तो सिंस मुझे माइनस करना है तो उसका साइन लगा देंगे एंड सिंस ये माइनस होगा इसलिए इट बिकम्स minus 80. So this becomes minus 120 plus 80. So the value is minus 40. Okay, so this was a part 2. Thank you so much.